Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is Fozia Fatma Official. So today we will learn these type of sentence structure. Okay. For example, मेरी मर्जी होती तो इसकी इंग्लिश होती है if I had my way. Okay. If I had if I had my way. My way. मेरी मर्जी होती तो. Okay. So let's see how to make these type of sentences. The first one is मेरी मर्जी होती तो मैं विश्व भर की यात्रा करूंगा करूंगा या करता. ओके. द सेकेंड वन इज मेरी मर्जी होती तो मैं पेशेवर संगीतकार होता. ओके. द थर्ड वन इज मेरी मर्जी होती तो मैं नाश्ते में मीठा खाता. ओके. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन इज मेरी मर्जी होती तो मैं विश्व भर की यात्रा करता. द सेकेंड वन इज मेरी मर्जी होती तो मैं पेशेवर संगीतकार होता. द थर्ड वन इज मेरी मर्जी होती तो मैं नाश्ते में मीठा खाता. ओके. लेट्स सी हाउ टू मेक इट. द फर्स्ट वन इज मेरी मर्जी होती तो मैं विश्व भर की यात्रा करता. इसकी इंग्लिश होगी इफ आई हैड माई वे. इफ आई हैड माई वे. If I had my way, I would travel. I would travel, travel the world, the world. Okay. If I had my way, I would travel the world. मेरी मर्जी होती तो मैं विश्व भर की यात्रा करता. द नेक्स्ट वन इज मेरी मर्जी होती तो मैं पेशेवर संगीतकार होता. ओके. इसकी इंग्लिश होगी इफ आई हैड my way. Okay. If I had my way, I would be I would be a professional musician. पेशेवर professional musician. Okay. If I had my way, I would be a professional musician. Okay. मेरी मर्जी होती तो मैं पेशेवर संगीतकार होता. ओके. द नेक्स्ट वन इज मेरी मर्जी होती तो मैं नाश्ते में मीठा खाता. इसकी इंग्लिश होगी if I had my way. If I had my way, I would eat. I would eat sweets. Okay. If I had my way, I would eat sweets. मेरी मर्जी होती तो मैं नाश्ते में मीठा खाता. Okay. Thanks for watching, and for more such as videos, please share and subscribe.